Welcome back to my channel Learn with Dr. Chetna. In today's video, I have taken up the poem The Roadside Stand by Robert Frost from your book Flamingo. Robert Frost was a highly acclaimed American poet. He won many awards for his writings. The theme of most of his poems were miserable plight of people. About complexities of life he wrote. He wrote about human tragedies and fears. In this poem, The Roadside Stand, the poet is talking about the stark difference that is there between the lives of the people living in villages and the people living in cities. So the theme of this poem is the inequality, the disparity that is there between the lives of the people living in villages and the people living in cities. Then he also writes about how these poor people, these village folks are befooled by the politicians or by the people in power. They are sold dreams, they are sold false dreams of their upliftment or their betterment, but these dreams never come true because nobody does anything about them. He is also frustrated about the insensitivity or the callous approach the rich people or the rich people of the city adopt towards these poor villagers. And he also feels that people must show compassion and kindness to these poor folks. So he talks about all these things in his poem A Roadside Stand. A Roadside Stand, the title is a symbol of poverty of the people living in villages. So let's begin the poem. I will be doing it both in Hindi and English so that understanding of the poem becomes clear and you get right words to write your answers. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. So a villager has built up a very small shop, a very small stall in front of his house on the edge of the road. सड़क के किनारे अपने घर के आगे एक छोटा सा stall बनाया है and where the traffic sped, where the movement of the traffic was quite heavy. That means the vehicles kept on moving to and fro on this road. The emphasis on the word little, जो emphasis है word little में इसको repeat किया गया है, that has been done to show that the village people are really very poor. They cannot make a big shop, they cannot make big houses, और जो भी उन्होंने बनाया है वो जोड़ तोड़ के by cobbling things together from different fragments, चीज़ों को जोड़ तोड़ के वो स्टॉल बनाया हुआ है. Therefore it does not look very attractive नहीं लगता है. शायद कुछ प्लास्टिक शीट को लगाया होगा, कहीं पे टिन की शीट को लगाया होगा, कहीं पे वुडन शीट को लगा के ये उन्होंने बनाया होगा. A roadside stand that too pathetically pled. That means the roadside stand itself is telling how miserable or how poor these people are. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supposed the flower of cities from sinking and withering faint. So the poet says that these people are poor, but they have their self-respect. They are not begging for money from these city dwellers. वो city dwellers से पैसा नहीं मांग रहे हैं. They are not asking it for free. वो free में कुछ नहीं मांग रहे हैं. They have certain things for sale out of which they want some money. वो कुछ चीज़ों को बेचेंगे और फिर पैसे को earn करेंगे. They will earn the money. They are not begging for money. But for some of the money, the cash, whose flow supposed the flower of cities from sinking and withering faint. Flower of cities means rich people or the facilities a city provides. जो rich लोग हैं, flower of cities का मतलब वो है या जो facilities city में मिलती हैं.
But for some of the money, the cash, they want some cash with them, and it is the cash that has made the life of people living in cities beautiful, comfortable. And the cash is, or the money is, a nourishing force for the cities, which these people don't have, and they feel that they are poor or miserable because they don't have the cash. The flower of cities from sinking and withering fade. The फ्लावर ऑफ सिटीज में मेटाफर का यूज किया हुआ है पोएट ने, क्योंकि फ्लावर सिटीज का मतलब है रिच पीपल और द फैसिलिटीज. अब सिटीज में क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं? सिटीज में देयर आर गुड स्कूल्स, देयर आर गुड हॉस्पिटल्स, देयर आर गुड पार्क्स, एंड these all flourish. A city flourishes, or the facilities in cities flourish, because of the continuous flow of cash. The polished traffic passed with the mind ahead. Now here the poet is sad when he says these lines. He says the polished traffic. Polished traffic का मतलब है कि the people who are sitting in the cars are polished. They have refined tastes. They are rich. They are wealthy. They are educated, and therefore they are thinking about themselves. They are busy thinking about their work. They are thinking about what they have to do. They do not pay attention to these poor people sitting there on the roadside stand selling some things they have procured from their own gardens, or from the forest, or from wherever they could do so. The flower of cities from sinking and withering fade. The polished traffic passed with the mind ahead. और इफ एवर aside a movement then out of sorts. तो पहले तो जो सिटी लोग हैं वो इतने इनसेंसिटिव हैं, इतने कैलस हैं, इतने हार्टलेस हैं कि वो उन लोग के उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दीज पुअर पीपल. और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स. और अगर उन्होंने कभी देख भी लिया उनको, तो दे आर नॉट बाइंग थिंग्स फ्रॉम देम, बट रादर they are full of complaints. That's why the city people are callous, heartless, cold, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. तो उनकी शिकायत क्या है कि जो यहाँ पे जो ये रोड साइड स्टैंड जो अगली सा लग रहा है, जिसमें बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, इट इज स्पॉइलिंग the beauty of this place. It is destroying the beauty of this place. It shouldn't have been there. यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. ये इसकी ब्यूटी को स्पॉइल कर रहा है without even understanding the miserable condition these people are living in. Then out of sort at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong. So these people have put up some signboards जो खुद अपने हाथों से बनाए हैं. उसमें उन्होंने एन लिखा है, एस लिखा है, एंड दैट इज रिटन रॉन्गली. वो गलत तरीके से लिखा है. दे आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस टू विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट दीज पीपल आर पुअर, सो दे डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. द पोएट tells that these people are uneducated through this line, and these city people are so insensitive that they are complaining about the signboards written wrongly without even understanding this fact कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि ये जो विलेज वाले लोग हैं बहुत पुअर हैं और एजुकेशन तो अवेल ही नहीं कर सकते हैं, इतने पुअर है ये लोग. और ऑफ साइंस दैट with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden courts or crook-necked golden squash with silver warts. So what exactly these people are selling? They are selling wild berries इन वुडन कॉर्ड्स, वुडन बॉटल्स में, और गोल्डन स्कॉश. स्कॉश एक तरह का पंपकिन होता है या फिर कद्दू या लौकी टाइप की चीज होती है. वो आई कैन शो यू द पिक्चर ऑफ इट. इस तरह की कुछ चीज वो बेच रहे हैं जिसमें सिल्वर वॉट्स में, तो सिल्वर कलर भी इसमें दिखाई दे रहा है. तो इस तरह की कुछ चीज वो बेच रहे हैं. तो बट दीज पीपल आर नॉट बाइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. और क्या बेच रहे हैं? कोई सीनरी बेच रहे हैं जिसमें माउंटेन्स हैं और ब्यूटीफुल माउंटेन्स बने हुए हैं. यू हैव द मनी, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग. द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड. हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड. सो नाउ here comes the role of narrator, that is the poet. Poet says,
why you people are being rude, why you people are being so insensitive, why you people are being so heartless. You are not understanding their miserable plight, and you have so many complaints, and you have money, you have enough money to buy these small things, but you don't want to buy any of these things. By buying these things perhaps you can help these people, but you are not doing that. आप उनको हेल्प कर सकते हैं ये खरीद कर, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, and that is a problem. You are so heartless. The heart to the scenery wouldn't be my complaint. तो जो आपने कहा कि इस रोड साइड स्टैंड की वजह से इस जगह की ब्यूटी स्पॉइल हो गई है, उसकी वजह से मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे उस बारे में कोई भी परेशानी नहीं है. बट वॉट इज माई कंसर्न इज दैट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेट. तो बोल रहे हैं कि दीज विलेज पीपल trust you city people, that you will come because you have wealth, you have money, you will buy things, and thus may help in bringing some change in our lives. But you are not doing any such thing. आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं. तो वो एक जो ट्रस्टिंग सॉरो है, मतलब वो ट्रस्ट कर रहे हैं और उनका ट्रस्ट जो है सॉरो में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो चीजें नहीं खरीद रहे हैं. Here far from the city we make a roadside stand एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. तो वो बोल रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि जो मनी आपके पास है उसका थोड़ा सा पार्ट हमको भी मिल जाए. वी शुड ऑल्सो हैव सम मनी सो दैट वी कैन बिकम प्रॉस्परस, वी कैन ऑल्सो बिकम बेटर in our lives. We can have some money so that we can bring improvement in our lives. That is why we are asking for money to try if it will not make our being expand. वही बात कह रहे हैं कि इससे हमारी लाइफ भी improve हो जाएगी. And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. और वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मूवीज में दिखाई जाती है जिस तरह की लाइफ, हो सकता है हमारी लाइफ भी कुछ वैसी ही हो जाए. When you will buy things from us, when we will have money, perhaps we can also think of the lives, we can also think of that kind of life for ourselves which is shown in movies. But if you do not buy our things, this will not happen. And then they are saying that the party in power is said to be keeping from us. Said we were promised, we were given promises that there will be some improvement in our lives by the party in power, but nothing has happened. They have forgotten about us. They had promised that, but they have not kept their promise. It is in the news that these pitiful kin, the poet is using the word pitiful, that means he is very much concerned about these people. He know that these people are poor, marginalized, have nothing with them, leading a very miserable life. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store. Now the news is doing the rounds. ये न्यूज़ चल रही है कि ये जो मिजरेबल लोग हैं गांव के, विलेज के, इनको अपनी जगह से रीलोकेट किया जाएगा. दे विल बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेसेस टू द प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. जो सिटी के आउटस्कर्ट्स के पास जो बनाए जाएंगे कुछ रहने के जगह, वहां पे इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा. आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर. तो जहाँ पे थिएटर होगा, जहाँ पे वो थिएटर में मूवी देखने जा सकते हैं, या फिर जहाँ पर ग्रॉसरी जो है उनको इजीली अवेलेबल होगी. सो दे विल बी शिफ्टेड टू दोज प्लेसेस वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर. नाउ देयर नीड्स, देयर कंसर्न्स विल बी टेकन केयर बाय द पीपल इन अथॉरिटी. तो जो लोग हैं, जो रिफॉर्मर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, पीपल इन पावर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो उनको ये बता रहे हैं कि नाउ वी विल ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ्स. यू विल बी रीलोकेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस विच आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज, एंड देन देयर विल बी अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ्स where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey. This line is important. While greedy good doers, they are good doers but they are greedy. So this is an example of oxymoron. Beneficent beasts of prey, they are beneficent but they are at the same time beasts of prey. That means they are selling
false dreams to these poor people. They have worn a garb of being good to these people, but actually they are doing their own benefit. वो उनको एक पहनावा ओढ़ के आ गए हैं कि हम तुम्हारे लिए अच्छा करने वाले हैं, बट असल में वो अपना अच्छा करने के लिए एक इस तरह का पोज कर रहे हैं कि वी आर डूइंग गुड टू यू, एंड दीज इनोसेंट गलिबल village folks, poor people, are not able to understand this fact. Swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. So the benefits which are being given to them, or which they are being told that we will be giving you benefits, are actually benefits of the are for the benefits of the people who are in power. तो उनके बेनिफिट्स के लिए हैं, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स. और इस तरह से ये चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं. ऑल द थिंग्स, ऑल द गुड, ऑल द ड्रीम्स ऑफ अ बेटर लाइफ, जो भी उनको सेल किए जा रहे हैं, जो ड्रीम्स उनको सेल किए जा रहे हैं, वो एक्चुअली उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं. बड़े आसानी से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. And by teaching them how to sleep, they sleep all day. That means they will make them inactive. They will make them weak. They will become weaker. Now, before that, they were asking questions. वो अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए बातें कर रहे थे. लेकिन जब उनकी लाइफ को बताया जा रहा है कि हमने बेटर कर दी, they will not have any questions left, because they will think now our lives have been transformed. But actually में क्या होगा? जो उनके अपने रहने का तरीका था, the traditional way of their living will be disturbed. Now they will have to work according to the ways decided by these city people or by the people in power. जो लोग पावर में हैं, जिस तरह की लाइफ उनके लिए डिसाइड कर रहे हैं, उन्हें वैसे ही जीना होगा. Till now, when they were their own places, they were free to lead their lives their own way, but now they will be dependent on these people in power, or who are showing them dreams of a better life. तो जो लोग उनको ड्रीम्स दिखा रहे हैं अच्छी लाइफ का, वो उनके गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा. बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, एंड व्हेन दे विल टेल देम दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, वी हैव ब्रॉट यू टू दिस प्लेस, नाउ योर लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड, फिर वो उनके बारे में कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार उन्हें रिलोकेट कर दिया, उनको बता दिया ये तो आपके अच्छे के लिए है, और वो भी ये सोचेंगे कि हमारे लिए अच्छे के लिए, तो अब वो न वो काम करेंगे, न वो क्वेश्चन पूछने की कंडीशन में होंगे. Destroy their sleeping at night, the ancient way, and their traditional way of living will be completely destroyed. That's why the poet is using the word greedy good doers and beneficial beasts of prey. Now let's move ahead. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. तो पोएट बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये विलेज पीपल जो है, ये इनकी जो लॉन्गिंग है एक बेटर लाइफ के लिए, या लाइफ जैसे सिटी में होती है उसके लिए, इट इज़ अ चाइल्डिश लॉन्गिंग. व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड टू हैव अ लाइफ दैट इज देयर इन सिटीज? The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the 1,000 selfish cars that pass. और वो बोल रहे हैं कि ये जो ये village people हैं, जो poor people हैं, why are they thinking that city people will buy something from them? Even if they are thinking of this, it is childish for them, because these city people are not going to come to them to buy things, because they are insensitive to their needs, they are heartless, they are cold. तो वो बोल रहे हैं कि they keep their window open, they keep the window of their houses open, they keep on listening to the sound of brake, sound of stopping a car. When a car stops, when there is a sound of brake, they get excited, they feel like yes, somebody has come to a shop, now they will be buying the things, but nothing such happens. So this very thinking, this very thought of hoping that these city people will buy something from them is चाइल्डिश. वो बोल रहे हैं ये चाइल्डिश है कि ये सोचना कि सिटी पीपल आएंगे और उनका सामान खरीदेंगे, इट इज ऑल चाइल्डिश. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द 1,000 सेल्फिश कार्स दैट पास. सो ही सेज
all these people are selfish, they are self centered. Selfish कार नहीं है, जो लोग हैं वो selfish है. So it is an example of transferred epithet. So of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. तो उनमें से कुछ लोग रुक भी जाते हैं. Sometimes somebody stops, वो पूछते हैं कि आपके prices क्या हैं, but they don't buy the things. And then कोई आता है यू टर्न लेने के लिए और जो ग्रास होती है वहां पे उसको भी डिस्ट्रॉय करके चला जाता है. दैट इट शोज दैट दे आर सो इनसेंसिटिव, दे आर सो कोल्ड, दे आर सो हार्टलेस, दे आर सो कैलस. उनके लिए, उनके जो सिटी पीपल है उनके लिए कोई भी फीलिंग्स इन गरीब, इन पुअर पीपल के लिए नहीं है. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, यू टर्न करने के लिए आते हैं. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कुछ लोग उनसे डायरेक्शन पूछने के लिए आते हैं. बस उनका काम इतना ही होता है, इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं करते. उनको उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है उनको वो मूव ही नहीं करती. दे आर नॉट मूव्ड बाय द मिजरेबल कंडीशन दीज पीपल आर लिविंग. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't. They had none. Didn't it see? और कुछ उनसे पूछने आते कि आपके पास गैस है, मतलब पेट्रोल है, और दे couldn't this crossly. फिर बोल रहे हैं कितने रूड हैं वो लोग, कितने इनसेंसिटिव हैं वो लोग कि वो इस तरह की बात उनसे पूछने आ रहे हैं, जबकि इट इज क्लियरली विजिबल दैट दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल देयर. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of a spirit has never been found. Here, this is the feeling of the village people कि जो भी country money, मतलब जो भी काम वो village में रह के, country का मतलब village में रह के कर रहे हैं, it does not provide them sufficient money. It only fulfills their basic needs, the basic needs of food, living and the basic needs of food and living and clothes. Beyond that, this money, beyond that, nothing can be done with the money they earn. तो वो सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करता है मनी, उसके बियॉन्ड उनकी कोई भी नीड पूरी नहीं होती. The country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. और वो कहते हैं this life is not a life where they have to think about just living. They need some betterment, they need a better life, they need an improved life where they can have access to good facilities, but whatever they earn in money is not sufficient for getting access to education, getting access to good hospitals, getting access to good parks. So this money is not enough. That's why they want that city people should help them by buying things from them. Or so the voice of the country seems to complain. Exactly what I just said earlier, that they feel like that कि जो सिटी, जो कंट्री में जो मनी या गांव में जो भी मनी वो अर्न करते हैं वो बेसिक नीड्स के अलावा कुछ भी उन्हें नहीं देता है. दैट्स वाई इट इज देयर विश दैट द पीपल शुड बाय देयर थिंग्स. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. फिर पोइट के माइंड में एक वियर्ड सा ख्याल आता है जिसको हम मर्सी किलिंग भी कहते हैं. तो वो ही इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड, ही इज सो मच पेन्ड एट द मिजरेबल प्लाइट और मिजरेबल condition of these people that he thinks that all their miseries, all their pains should be ended with one stroke. That means death, उनको mercy killing करके उनको मार दिया जाए और उनके सारे प्रॉब्लम्स एक ही बार में खत्म हो जाए. Instead of experiencing pain every next day, it is better that at one stroke all their miseries, all their sufferings should come to an end. And then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. And then the poet says that this was a weird idea, what exactly I was thinking. He feels that something must be done about these people, and he is hoping that these people would come to him to tell that our sufferings are over. And when they come to him and they tell us that their sufferings are over, perhaps that would relieve the poet of his own suffering. क्योंकि poet क्यों सफ़र कर रहे हैं, why he is frustrated because of the miserable plight of these people. तो वो बोल रहे हैं कि उनके लिए लोग कुछ करें ताकि उनकी
जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो, और जब उनकी सफरिंग्स ख़त्म होगी तो पोएट भी उस सफरिंग से अपने आप को रिलीव कर लेंगे, अपने आप वो सफरिंग्स उनकी भी चली जाएगी. So this is the poem, The Roadside Stand. I hope it's clear to you, and if you are liking the content of my channel, please like, share and subscribe to my channel.